and the 27 nation EU bloc, so 27 plus 4 there, 1 UK. The GCC chief negotiators, UAE is done, but there are still 5 more countries, met on the 29th of August. So last month was a month of full of flurry of activities on the FTA front. I've already got 5 or 6 other countries who've requested that we should initiate FTA discussions. But if I drive my team anymore, I think they'll all leave me and stop all the negotiations, because they're already doing 2 shifts. They do 1 negotiation in the morning, 1 in the evening, and I don't think I can drive them any further. Sir, the component industry will be very thankful if we did FTAs with South Africa, with Brazil. I know Iran is a difficult subject, but whenever the things get right, that could be another market we could look at. I had a conversation with Ibrahim Patel, my counterpart from South Africa. They have certain challenges. They are yet to figure out whether they'd like to look at the union of countries that they have with them, or they'd like to look at the whole African Union. And India, it's an AFTA, I think, African Free Trade Agreement, AFTA, India agreement. They're still deliberating and making up their mind. As regards Brazil, we have a Mercosur small deal, PTA, but we are very keen to expand that. But sadly, they have internal contradictions within the Mercosur region. I've had a conversation with my Brazilian counterpart some time back, but then the government has changed. I haven't yet been able to reopen the discussions with the new government. I think post G20, given the excitement that we saw amongst all the leaders and what they have experienced over the last 10 months in India, probably we'll see a lot more excitement and potential even with these countries. All right. If I were to ask you about UK and European Union, Minister Goyal, how difficult has it been so far in defending the interests of the Indian automobile industry over there? We want greater localization. We want the Indian auto industry to export more. But what about negotiations with these countries? How difficult has that been? With which countries? UK and European Union. All negotiations are difficult, and yet all negotiations are fun. We do that all the time, don't we, in business? It's how you approach it. When you come with a sincerity of purpose, when you come with facts and figures and a strong command and knowledge about your subject, negotiation can be fun. You can negotiate from a position of strength. If you have the confidence and backing of your stakeholders, then it's even better. Then you go with even greater strength and courage of conviction in what you are talking. And at this point, while I did acknowledge the contribution of ACMA yesterday, but that was at a CM program, I must place on record that personally and as a representative of the nation, I must thank each and every one of you in this room and all the ACMA members for the absolute and unconditional support that ACMA has always given in any of our negotiations. It's one of the most self-confident ones. This set of industry participants are always most forthcoming. They know they can compete with anybody in the world, and by anybody, I mean any and everybody. They're ready to compete with anybody. They say, you get us access zero duty in the country, you can give auto components, we can manage our way through, don't worry. हम किसी से डरते नहीं हैं. And that's the spirit of New India. That's the spirit of the future of this industry, which is going to take us far and wide. I'm glad Pawan gave a $100 billion export target. I second that, I endorse that, and we in government will do anything it takes. Now don't come for subsidies though. We have already done a pact on that. But anything that we can do to make life easier, business easier, and open up more opportunities for you, I promise you, you won't find us wanting. It'll be great to work with you. It'll be great to work together with you.
And undoubtedly, I'm sure you will not only meet or surpass what Pavanji has said, but you will make India proud. You'll make the whole nation proud with your achievements. So big round of applause to that. So Minister Goyal, you're really appreciating the work of ACMA, but at the same time, you're someone who's really been driving the localization agenda, urging the industry to localize more. Is there certain targets that you would like to set for the industry? What would be your expectations from the component industry, the OEMs as well? Parikshit, I am not one of those who believes that every country will necessarily make everything. I don't think that ever happens. I mean, if you look back at any economic theory, maybe if you look at Michael Porter's theory, some of these young boys and girls must have studied that. When Michael Porter said that it's ultimately the competitive advantage amongst different regions or different companies, or the comparative advantage of nations, the theory that he had articulated, he brought out very forcefully that every country will have certain strengths, weaknesses, and what we should focus or leverage on is our strengths. So I, for one, will never be expecting that India will become a zero import country. It's not going to happen. There'll be certain products we can get more efficiently from somewhere else. As long as there's a level playing field. There's no hidden subsidies there. There's no opaque pricing structure. If there's transparent, rules-based economic model in operation on both sides, and in a fair competition, somebody can provide a product cheaper or better, or of a better quality, I think we should accept that gracefully. What I feel is, given the strengths of India on the auto component sector, this particularly is one sector where we have the capabilities, where there may be very few items, if at all, which ultimately we may not be able to localize. Probably we may begin with components and then move into assemblies, sub-assemblies, assemblies, and maybe then make the whole gearbox or then make the engine here. I don't know. There could be stages. But having worked closely in my own life from the age of 17 in this industry, I can say that this is one industry that ultimately, given the quality that we produce, the economies of scale that the world's third largest auto industry has today and aspiring to be the largest industry in the world. I've set a target of a 10x growth in the next 15 years, I said. I don't know. I also keep forgetting. Not 5 years. I wouldn't be impractical. So I think these economies of scale, our managerial talent, the skills that our youth have, the innovative spirit, the spirit of inquiry that our young boys and girls have, all of this put together will get us there, and we probably will become a self-sufficient industry, and also an industry which will be an integral part of resilient global supply chains. Right. The China Plus One strategy, many have said, and even the World Bank chief Ajay Banga, when he was here in Delhi last week, said that the China Plus One opportunity is there for the country, and it will be there for the next 4 to 5 years. We already have 13 or 14 PLI schemes across sectors. At least 3 for the automotive industry. You've got an ACC PLI, you've got a PLI for components, PLI for vehicle champions as well. Could there be more PLI schemes to make sure that we rise up to this opportunity that is coming because of countries looking at an alternative from China? First of all, I totally debunk and reject the China Plus One theory. That's not what is going to drive India. Yesterday we had a little bit of a conversation in the room next door after the CM meeting. Those of us who were in that conversation may think I have prompted Parikshit to ask me this question. But I promise you no. Yesterday we had a conversation and I was reminded of a discussion that I had had many, many years ago
or if I may use the phrase, many moons ago, given we've just been very successful on our Chandrayaan-2 mission, Chandrayaan-3 mission, with Mr. Atal Bihari Vajpayee, the former Prime Minister of India. And he had shared with me his own way of working in life. He said, if there is a small line that is troubling you, don't try to erase that line. You make your line which is bigger than that small line. तुम छोटी चीजों से परेशान होने के बदले तुम उसके बाजू में उसके साथ अपनी इतनी बड़ी लकीर बनाओ कि वो दूसरी लकीर छोटी हो जाए और आपकी लकीर ज्यादा प्राथमिक हो जाए, बड़ी हो जाए. The India of today is not attracting the world to come to India just because they may be looking for an alternate to some other country. The India of today stands on its own feet. The India of today has offerings for the rest of the world, which will attract them to India, both for investment, for trade. India provides them a good business environment, provides them manpower, provides them skills and managerial talent, provides them a big market, a demand generated by 1.4 billion brothers and sisters. It's a democracy with a rules-based economic system. It's a young democracy which will continue to be young for the next 30 years. Our average age is 28 point something. And for the next 30 years, we continue to be a young country, below 30 years average age. It's a country which will be, for the next many, many years, possibly decades, one of the fastest growing large economies. All of this makes it a compulsive investment destination, makes it an attractive business destination, and therefore companies around the world have gone beyond the China plus one story. They've gone beyond the ABC philosophy of anything but China. They've gone beyond French shoring or near shoring and are looking at India as a trusted partner. Indians as people you can trust in your global resilient supply chains. तो हम आज अपनी ताकत पे खड़े हैं, अपनी क्षमता पे आगे बढ़ रहे हैं. That's an important point because during the pandemic and also during the war, everyone was looking at trusted partners abroad. Now, I'd like to ask you about tariffs, Minister Goyal. There was a time when Tesla was asking for massive duty cuts, and we sent out a clear message that whatever treatment is for the auto industry, it will be for everyone. There are no special concessions on the table. But recently, there have been reports that the government may be considering duty concessions on completely built-up units to attract certain section of electric cars into India. In terms of our next electric vehicle roadmap after FAME 2, is that something that you're considering? This is a listening government. This government keeps its eyes and ears open. This government looks at trends around the world, looks at opportunities around the world, and is continuously making every effort to attract newer investments, newer opportunities to serve all of you and to open up doors for our young boys and girls in the future. Very clearly, we can see that going forward, there will be a natural demand and an increasing demand or shift driven by an economic story, driven by a compulsive case towards sustainability, by which we will see the electric auto industry growing. Electric auto industry, as it grows worldwide, will see the footprints of that growth in India also. Already the delta between the electric vehicle and the other vehicles is now
reduced or narrowed quite significantly. My own sense is going forward that delta will get further squeezed and compressed. Of course, on a life cycle cost, on a cost where you look at capex and opex and calculate what's good for a consumer, in many cases, particularly, for example, in taxis, public transport, in buses, we already see electric vehicles having become a very compulsive investment case. In this situation, we would like to see more investments and a larger production output in India of electric vehicles as soon as possible in the near future. The idea being that as we get large-scale production, we'll start enjoying the fruits of economies of scale. We'll start enjoying the fruits of new technologies, innovation, R&D coming into India. The auto component industry will not only then produce for a larger India demand, but with same models being sold in the rest of the world, you will also start exporting those components. Tesla already last year bought $1 billion of components from, I think, all of you sitting here. I have the list of companies who supplied to Tesla. This year their target is nearly 1.7 or 1.9 billion dollars, what they mentioned to me. Yesterday I had a conversation with some of the other auto industry participants, and they also indicated that they have interest in coming to India. And therefore, I'm convinced that this is the future. It's something which we must try to attract, but this government also has a track record of 9 years plus now, where everything we've done has been done equally, without any differentiation, without any preferences. In our government, we don't give a name on a slip of paper. Not that I'd asked him to send me this, but you don't get a name on a slip of paper and then the committee is told that, okay, you have to allot this coal block to this company. We don't do all of that. Neither do we have people running upstairs to reach first onto a counter because telecom licenses will be given first come, first served. This is a government which provides equal opportunity to everybody. So we'll come out with a policy which will be in consultation with all the stakeholders. CM, ACMA, both will have a role in helping us craft a good policy. And if I have the permission of the chair and Vinny and all of you, I want to share with you a small personal experience, and if I remember correctly, it was also CNN or CNBC, an experience that happened with me on an overdrive function. Probably, Pavanji, you were there. You were receiving an award from me that day. At a CNBC overdrive award function, I stood up to speak, and as most of you would by now know, I don't like referring to new papers. Yesterday, except for the Vivekanand quote, everything else on my paper was so drab that it would have been a very boring conversation, so I didn't refer to it. So similarly, I was addressing the audience at that. Let's create our own indigenous model. I want you to hear that. It was impromptu. Plans. It was not planned. Aggressive plans. You know, Prime Minister Modi does not like small targets and small vision. He's clearly a person who likes big vision, ambition, speed, scale, skillfully executed, honestly, through transparency, close monitoring of the program so that people can be held accountable. And if we as a team make it a mission that by 2030, every vehicle that is sold in this country will be an electric vehicle, I promise you, ladies and gentlemen, India will become the world leader, an unparalleled world leader in this field. And that is the vision we should all aspire for. Thank you.
Let's create our own indigenous models of development. Let's So this I had said just off the top of my head. It was not planned. I had not expected to. It was in 2016. If it is December, I'm assuming it must be 2016 because that's when I was giving a push to the renewable energy story as renewable energy minister. And we had already achieved the mission of interconnecting the national grid, and power cost had come down significantly. You'd almost started getting power at the states for the discoms at 2 rupees, 2.5 rupees, 3 rupees. Solar energy, we'd done transparent bidding, brought down the cost from 7-8 rupees to 2 rupees 41 paisa, if I remember, around that time. That was the bidding price for solar energy. With all of this, I just off the top of my head had just suggested that I can see the story unfolding. And that's what I had said at the Hyatt Regency Hotel. It was, I still remember. It was the Hyatt Regency Hotel, not too far from here. And I lost track of it. Recently, one of my colleagues dug this out and had me hear it. तो मुझे अभी याद आया तो मैंने उसको बुला के कहा कि जरा दिखाते हैं. It was off the top of my head, but sometimes when you speak from the heart, as Shah Rukh Khan said, पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है. The whole universe conspires to make you successful. In 2023, I somehow get the feeling that the day is not far. And for all you know, it could be by 2030. That it'll be a compulsive business case for consumers to go in for electric vehicles. It will not be by any policy push, it will not be by any law, there will not be any intervention or an artificial intervention to move towards one direction. But I think the compulsive economic proposition will be too good of an offer for anybody to refuse. Right, that's a very important roadmap that you're putting in front of us, Minister Goyal. I'd also like to ask you about sustainability and mobility, because sustainability is the big theme at this automotive convention today. You've been discussing and negotiating with so many countries. Everyone is coming with strong thresholds, rules around sustainability, emissions as well. There are CBAMs in Europe. How are we looking to counter that? And what would be your advice to all component manufacturers in the industry today? What do they need to do to start implementing a sustainability agenda across their business segments? Well, that's a very good question, Parikshit. We are in dialogue with the EU, we are in dialogue with other countries to see what they have in mind, how these new initiatives like CBAM will impact India and Indian industry, Indian manufacturing. And I can assure you, we are there to protect your interests, and any amount of laws any country may bring out, we will ensure that it doesn't hurt any of your businesses. That you can rest assured. Our dialogue with them is progressing well. They are also working on it not as a non-technical barrier to trade, as their own effort to try and bring sustainability at the core of the world agenda. And rightly so, we've seen so much damage all over the world. It's largely being attributed to climate change. I mean, what's happened only a few days back in 2 different parts of the world could also have some connection with climate change. We've seen what happened in the hills of Uttarakhand and Himachal in our own country this year. So things are looking to be serious, where we all have to collectively find solutions to this challenge of climate change. In that sense, the European Union has come out with certain proposals. From October, we'll have to start reporting, but taxes will not be payable until 2026, during which period we are already discussing the free trade agreement. We'll also find a smarter way to ensure that we are able to decarbonize our economy. As it is, we are committed to reduce our carbon emission intensity by about 45% from 2005 levels by 2030. And we are well on track to achieve that. We are also now finding that pump storage and
newer ways, the offshore wind, also onshore wind, solar has become much more affordable. Green hydrogen and green ammonia are becoming the next fuels of the future. So India is going down the green path very rapidly. We are looking at green steel in the future. Possibly at some stage, I'm happy to discuss with your industry, we could create some auto parks or identify the 4 or 5 regions which have a large number of auto component manufacturers and work with those state governments. Fortunately, 2 or 3 of those are in friendly states which will be more action oriented: Maharashtra, Gujarat, Pune, Sanand, Gurgaon. We could look at Noida or thereabouts. We could create some large auto component park. I'm happy to discuss with all of you and find some newer ways. Hosur belt also has a lot of auto component and auto industry. So there are few very identified areas. We could look at working with all these state governments to see whether we can create a whole ecosystem to provide 24/7 clean energy. Maybe we can have a mix of solar, wind, possibly green hydrogen, powered electricity, stored electricity, possibly pump storage projects. And then industry, government could work together to create that ecosystem which will decarbonize our production. Simultaneously, we are working with the steel industry also in a big way. All of this put together, and possibly some policy interventions to accommodate the demands of the world today, will give us a competitive edge over other countries. So I personally look at all these not as impediments, but I'm continuously examining to see how we can convert this so-called problem of CBAM into an advantage for Indian industry. All right. I think many of them in the industry would be very rest assured on hearing that, because that had created unease in the automotive industry. But Minister Goyal, thank you very much for giving us the government's vision on electric mobility. And of course, a lot of people thinking about what will happen with FAME going forward. And probably we will get some clarity on that as well in the days to come. Thanks once again for talking to us. Thank you. Thank you. To the Honourable Minister for his very inspiring and motivating, optimistic and very facilitating address. Thank you, sir. देवी सज्जनों, हमने ACMA की एनुअल रिपोर्ट जो वार्षिक रिपोर्ट है उसका भी अनावरण करना चाहेंगे। तो मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय भारी उद्योग मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी से कि इस रिपोर्ट का वह अनावरण करें। In fact, requesting both the ministers, माननीय श्री पीयूष गोयल जी से भी निवेदन है। ये एनुअल रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट ACMA की वर्ष 2022-23 की, और इसमें ACMA की जो उपलब्धियां रही हैं, जो साल भर की गतिविधियां रही हैं, उसका वर्णन किया गया है। This, ladies and gentlemen, is the annual report of ACMA for the year 22-23, citing the many achievements and accomplishments and the work which has been done by ACMA in the year gone by. और अब मैं आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी से निवेदन करती हूँ अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। आज ACMA के 63वें इस एनुअल सेशन के मौके पर हम सबके बीच माननीय मोदी सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री, वाणिज्य, उद्योग और वाणिज्य तथा उपभोक्ता मामले, टेक्सटाइल और खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण
इन सब बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालयों के दायित्व को संभालने के साथ साथ राज्यसभा में माननीय नेता ऐसे माननीय पीयूष गोयल जी, आज यहाँ एकमा के चेयरपर्सन श्रीमान संजय कपूर जी, सुश्री श्रद्धा सूरी मारवा जी उपाध्यक्ष एकमा, विनी मेहता जी महानिदेशक एकमा और सभी एकमा से जुड़े सम्मानित आप सभी महानुभाव, परीक्षित लुथरा जी मीडिया के हमारे बड़े सीनियर पर्सन, हम माननीय गोयल जी के बहुत ही सारगर्भित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम के बाद और मुझे जो आप सबकी आपके एनुअल फंक्शन में जो चर्चाएं करनी उसमें बहुत सी बातें उसमें आई हैं। आज हम सब का क्रम थोड़ा कैबिनेट के लंबा चलने के कारण आगे पीछे हो गया है। हम इसके लिए आपका पद आगे कैसे है मैं तो संक्षेप में कुछ आपसे आग्रह करूंगा। आज ऑटो इंडस्ट्री का आपका ये जो एकमा और सियाम का मिला जुला जो ये टियर सिस्टम है, निश्चित तौर से छोटे कंपोनेंट पार्ट्स को जोड़ करके पूरी प्रोडक्ट को आप लोग जिस तालमेल से चीज़ों को लाते हैं, मैं उन्हीं पर बात आगे बढ़ाने के पहले माननीय गोयल साहब जब अपनी बात शुरू कर रहे थे तो उन्होंने जिस वैश्विक उपलब्धि की चर्चा G20 में मैं निश्चित तौर से आज भारत में ऐसा माहौल है कि माननीय मोदी जी की अगुवाई में जिस तरह से अब तक के संपन्न हुए G20 में और उससे आपका रिलेशन है, एकमा उससे जुड़ता है, कैसे जुड़ता है वो मैं बातें आगे लाऊंगा। कि आज जैसे होली दिवाली पे एक दूसरे को बधाई देते हैं, अभी रिसेंट G20 संपन्न हुआ है, हम लोग जहां मिल रहे हैं, खास करके आप जैसी हायर जेंट्री के लोग और सामान्य जन भी G20 की सफलता की बधाई दे रहे हैं। हम सब मंत्रियों को इसलिए दे रहे हैं कि हम सब ये बधाई माननीय मोदी जी तक पहुंचाएं। तो ये अपने आप में भारत की जिस उपलब्धि की तरफ भारत आगे बढ़ा है माननीय मोदी जी की अगुवाई में, निश्चित तौर से ये आप जो कंपोनेंट से जुड़े लोग हैं उनकी संभावनाओं को भी बढ़ाता है। जिसके 83 डिसीजंस वो जहां दुनिया की समृद्धि और विकासशील देशों की समृद्धि, विकसित देशों से विकासित देशों के संबंध को बेहतर करना, गरीब देशों की भी चिंता करना, जस्ट लाइक अफ्रीकन कंट्री का अफ्रीकन संघ का जुड़ना, इसके साथ साथ भारत के विकसित भारत के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना, तो ये सारी चीजें आप सबको बल प्रदान करती हैं। आप इस बात को महसूस करेंगे कि एक अनुभवी नेता के अगुवाई में देश सौंपने का आपको कैसे सुखद परिणाम मिल रहा है। लगातार 13 वर्षों तक एक राज्य का मुख्यमंत्री, और अब तो रिकॉर्ड है 9 वर्ष से अधिक समय प्रधानमंत्री और 13 वर्ष से एक राज्य का उसको समृद्धि की तरफ ले जाने वाले मुख्यमंत्री, और आज हम सबके आप सबके प्रधानमंत्री, शायद इतने अनुभवों से भरा नेता भारत ही नहीं दुनिया में कोई नहीं है जिसका एक गुड ट्रैक रिकॉर्ड है। आज हम सबको लीड अप कीजिए। तो उनके नेतृत्व में जो चीजें आगे बढ़ रही हैं, अब देखिए उसको कि कैसे गरीबों के जीवन का उत्थान हो। जहां जहां गैप है, आवास नहीं, शौचालय नहीं, गैस नहीं, लोगों को बेहतर बिजली नहीं, ये सब चीजें आगे बढ़ा करके हिंदुस्तान को वहां भी दृष्टि देना, और उसमें से जो 9 मध्य वर्ग, न्यू मिडिल क्लास जो डेवलप हो रहा है, वो सीधे आपसे जुड़ता है। ये मोदी जी की बड़ी देन है। अटल जी ने जिस बात को आगे बढ़ाया था, वो जो बीच में 10 वर्ष रुक गई थी,
अटल जी ने 10वें 11वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था को पहुंचा करके जहां पहुंचाया, उससे 10वें नंबर के बाद ये देश आगे नहीं बढ़ पाया। आज मोदी जी के, मैं तो मोदी युग कहता हूं, लोकतांत्रिक भारत का मोदी युग, जिसमें आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया में बनकर पहुंचे हुए हैं। तो इस अहम मोड़ तक आते आते मैं जिस न्यू मिडिल क्लास की चर्चा कर रहा था, तो मैं गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूं। हैवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, उसके पहले स्किल, इनको देखने से जो अनुभव हम शेयर करते हैं कि गांव में पुराना जमाना था, मेरी बात पता नहीं आप कैसे लेंगे। पहले जमानों में लोग स्टेटस सिंबल होता था, भाई इसके पास हाथी है, इसके पास 2-4 घोड़े हैं, और ये हाथी घोड़ा पीछे की चीज हो गई है। इसके पास 4 व्हीलर है, अरे नहीं 2 नहीं 4 4 व्हीलर है, उसके पास ये लग्जरी गाड़ी है। ये मनुष्य की, व्यक्ति की पहचान का, आर्थिक समृद्धि का, उसका स्टेटस सिंबल आज है। पता नहीं गांव में आप लोग कितना प्रवास करते हैं। गांव का आजकल प्रधान भी पहले हो रहा, तो पहले वो 4 व्हीलर खरीद ले रहा है, ब्लॉक प्रमुख और एमएलए तो बात की चीज है। तो आज ये सब जो परिस्थितियां निर्माण होती हैं, तो मोदी जी ने जो एनवायरमेंट हिंदुस्तान को दिया, एक विकसित, विकासशील भारत से विकसित भारत की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ने वाला देश, उस तरह की नीतियां, कारगर नीतियां, निर्णय, और एक वाक्य में कहा जाए तो मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि अपने हर नीतिगत निर्णय को, उनकी योजनाओं को, उनका डिलीवरी सिस्टम इतना फास्ट रहा कि आज परिणाम 9 साल में हिंदुस्तान में दिखलाई पड़ रहा है। तो इस सब से जब क्रय शक्ति बढ़ रही है, तो लोग गाड़ियों को खरीदने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भारत में जहां आप ऑटो इंडस्ट्री में दुनिया में आज आप सबके पुरुषार्थ से, उसमें एकमा का भी बड़ा योगदान है, श्याम का योगदान है, आप भारत को तीसरी दुनिया में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में आपने लाके खड़ा किया है। तो उसमें मोदी सरकार के कदमों ने भी भारतवासियों की क्रय शक्ति बढ़ाई है, जिससे आप कंपोनेंट बनाने वाले और श्याम ओईएम बनाने वालों को भी अनेक नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इस परिस्थिति में आपके इस जो 63 ये आपका सम्मेलन है 63वां, उसका अपना एक बहुत महत्व है, और महत्व अपने आप में। वैसे तो हमेशा आप 12-13 सितंबर के बीच एक बार 12 उनका, 13 आपका, फिर 13 आपका, तो 12 उनका होता है। लेकिन G20 के जस्ट बीतने के बाद ही आपका ये सम्मेलन अपने आप में बड़ा एक महत्वपूर्ण सेगमेंट बैठता है कि कैसे एक बड़ी उपलब्धि, और जिसको भारत में वैश्विक अर्थों में भारत की जो वेट बढ़ा है, और उसमें आप उस वेट के बढ़ाने में अपने सम्मेलन से और सहायक साबित हो रहे हैं। इस पर अपनी शुभकामना देते हुए जिन जिन चर्चाएं हुई हैं, मैं समझता हूं बहुत सी चीज़ों तो माननीय गोयल जी के प्रश्न उत्तर में वो आ चुकी हैं, लेकिन हो सकता है मैं उसमें भी कुछ चीज़ों को दोहराऊं। आज तमाम एडवांस ऑटो कंपोनेंट में आप सब महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं, और भारत सरकार अपने नीतियों से, खास करके अपने अनेक निर्णयों से उसमें योगदान कर रही है। जब परीक्षित जी फेम की, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की चर्चा कर रहे थे, मैं सुन रहा था, तो आप इस बात को महसूस करेंगे, ओईएम से जुड़े आप सब अनेक लोग इन सब विषयों पर पहले से अपने से भी काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार का काम है प्रोत्साहन देना। सरकार ने इसमें प्रोत्साहन के अनेक कदम उठाए, और जिसके चलते जहां फेम 1 स्कीम 1000 करोड़ की हमारी स्कीम आई थी, एक परिचयात्मक इंट्रोडक्टरी स्कीम थी, लेकिन आपका रिस्पांस देके उसमें 10,000 करोड़ की स्कीम फेम 2 लेके हम लोग आए। और मुझे ये कहने में प्रसन्नता है, उसमें गोयल जी के भी मंत्रालय का, अन्य ऊर्जा, आवास और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, इन सबका योगदान है। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, बड़ी गाड़ियां, इनको लेके 10 लाख का टारगेट फेम 2 में रखा गया था कि 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम इस स्कीम के तहत, आपके जो
श्याम और आपके ऑटो कंपोनेंट सेगमेंट से जुड़े लोग जो अपने तरीके से अपना और उत्पादन करते हैं, अपनी खुद की पहलों से आगे आ रहे हैं, उन सब के अलावा और आज सरकार इसमें अभी 2024 शुरू नहीं हुआ, 2023 के बीतते बीतते अभी इस अवधि तक हम 9,40,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पर फेम स्कीम के तहत उतार करके आपके बीच ला चुके हैं। आपके सहयोग से इसके लिए आप भी अभिनंदन के पात्र हैं, अभी बधाई के पात्र हैं। तो सरकार की इस स्कीमों को लगातार सपोर्ट मिल रहा है और आप सब लोगों ने आज आप सबके प्रयत्नों से जहां इस 2021-22 में आप जितना भी आपका योगदान था निर्यात एक्सपोर्ट में, उससे आप आज बढ़ के कई गुना बढ़ के आपने उसमें अपना स्थान बढ़ाया और 20 अरब डॉलर तक का आपका हुआ है। ये आपका सबका योगदान है। इसी के साथ साथ आज आप सबको हम उम्मीद करते हैं कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड पर आप सब जो पहले कर रहे हैं और उन पहलों में ये तमाम टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो आप ला रहे हैं वो वैश्विक स्तर पर हमारी क्षमताओं को भी दिखा रहे हैं और जिससे आज आपने जो चर्चा की थीम दी है, बिल्कुल आपने उस पर भारत सरकार की नीतियों के सापेक्ष आपने 360 डिग्री प्रतिस्पर्धात्मक निरंतरता, मोबिलिटी 360 डिग्री प्रतिस्पर्धात्मक निरंतरता के लिए, कंटिन्यूटी के लिए जो आपने थीम रखी है, यह अपने आप में हमारी सरकार की जो नीति है कि हम वैश्विक स्तर पर हम दुनिया के हर उस गैप को स्टडी कर रहे हैं जिससे हम विकसित भारत बनने के पावदान पर बढ़ने में जहां जहां रुकावटें हैं, और उसका बड़ा पैमाना है ऑटो इंडस्ट्री, और उसमें आप सब अपना योगदान कर रहे हैं और आज की चर्चा की थीम भी उसी को मुख्य केंद्र बिंदु रख के आपने रखा है। आपके द्वारा जो मजबूत ऑटोमेटिक सप्लाई चेन तैयार किया गया मेक इंडिया तर्ज पर, मैं उसके लिए आप सबको एक तरह से अपने तरफ से बहुत साधुवाद देता हूं। और मैं थोड़ा आपका आह्वान करना चाहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की संस्कृति को बहुत ही प्रोत्साहित करने की आज जरूरत है और उस पर आप काम कर भी रहे हैं और कई उन्नत टेक्नोलॉजी को आप सब अडॉप्ट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उसमें और तेजी से काम करने की आज जरूरत है। और आज के समय में जो हम सब ग्रीन मोबिलिटी, पर्यावरण अनुकूल पहले कर रहे हैं, मैं तो जब वायुमंडल जैसा बनता है, COP 26 में माननीय मोदी जी ने जो वचन दिया 2070 तक नेट जीरो और पंचप्रण दिया, आज उस सबका प्रभाव है कि आपका बैकड्रॉप भी पूरी तरह से ग्रीन मोबिलिटी को परिलक्षित कर रहा है। अब ये जो बैकड्रॉप है ये कहीं न कहीं वर्तमान और खास करके यंग जनरेशन को मैसेज दे रहा है कि अब ये दिशा में, भारत इस दिशा में आगे बढ़ चला है, अब इससे दूसरी दिशा में जाने की जरूरत नहीं है। तो उस दृष्टि से जो आप सब कदम उठा रहे हैं और उसमें बड़े पैमाने पर हमारी सरकार की नीतियों ने हाइड्रोजन मिशन और उसके साथ साथ एथेनॉल ब्लेंडिंग, ये सारे कदम लंबे अरसे बाद आपने पाया होगा कि हम 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग की इसमें ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य रखे और हम लोगों ने उसको 5 महीने पहले अचीव कर लिया और 10% की जगह आज 20% ब्लेंडिंग की बात आगे बढ़ चली है और वो भी टारगेट है कि 2025, मैं समझता हूं कि माननीय मोदी सरकार अगले पड़ाव पर आते आते 2025 से भी पहले ही उस टारगेट को पा लेगी और जो कि ग्रीन मोबिलिटी को तो बढ़ावा देगा ही, साथ साथ आम किसानों को भी उसमें, आम देश की जनता को भी, और जो हमारी देश की बहुत सी समस्याएं हैं, किसानों के गन्ना के उचित मूल्य से लेकर के, पराली के जलने से लेकर के, वायुमंडल के प्रदूषित होने से लेकर के, उन सब का समाधान है। तो इन सब नई टेक्नोलॉजी में, नई पहलों में भी ACMA की पहले भी अहम भूमिका रही है।
इस आपके सम्मेलन के अवसर पर मैं अपेक्षा रखूंगा कि आप और भी बेहतर भूमिकाएं उसमें लाएं। इसके साथ साथ मैं ये आपको बताने में मेहर पीएलआई की चर्चा माननीय गोयल साहब से प्रश्न उत्तर में परीक्षित जी ने रखा। हम चर्चा में गोयल जी से अक्सर हम मिलकर करते रहते हैं कि कंपोनेंट से जुड़े लोगों ने इसमें कितना रिस्पांस किया पीएलआई में कि हम उस स्कीम में हम लोग 25,938 करोड़ की स्कीम लेके ओईएम और कंपोनेंट दोनों के लिए आए। हमें अपेक्षा थी हमारे डिपार्टमेंट को कि 30-40 हजार करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन आशा से विपरीत आप दोनों पक्षों ने 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट को आश्वासन दिया। हम इसके लिए आपको हृदय से आपका अभिनंदन करते हैं। और इसमें जहां हमारे 18-19 ओईएम जुड़े, कंपोनेंट ने अपनी बड़ी सहभागिता की और लगभग 67 कंपोनेंट्स से जुड़ी इंडस्ट्रीज हमारे संग जुड़ी इसमें, इस स्कीम में। उसी तरह इसी पहल पर हमने 18,100 करोड़ की जो पीएलआई लॉन्च की, उस पीएलआई में जिसमें 30 गीगावाट का प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, हम लोगों ने तो 20 गीगावाट भी कर दिया था, लेकिन कुछ एक कंपनी थी जिसका आपसी अंदरूनी आंतरिक विषय था। और मैं आपको बताने में मुझे खुशी है कि उस 20 गीगावाट की भी फिर से बिडिंग की प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ा दिया है। और आज हम जहां एक भी गीगावाट प्रोडक्ट नहीं होता है, वहां पर आपके इस सम्मेलन के मौके पर बताने में प्रसन्नता है कि हम जहां आज इस पर हमें पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं, हम जनवरी 2024 जनवरी फरवरी प्रारंभ होते होते भारत में लिथियम एसीसी बैटरी का उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये भारत सरकार की इस पीएलआई योजना की पहल का प्रतिफल है। और अब तो ये दायरे और बढ़ाए गए। जहां हम लोगों ने अभी, आप कंपोनेंट के लोग सब चीजों से जुड़े हुए हैं, आप तो ऐसे लोग हैं कि बिना आपके कुछ बन भी नहीं सकता, चाहे 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। जहां हम 7,000 बसों तक आज थे, अभी माननीय मोदी जी ने विगत दिनों शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से 10,000 और ईवी बसों के लिए इस देश के अंदर एक बड़ा निर्णय लिया है। तो ये सारे बड़े कदम आपके कारोबार को, आपके उद्योग जगत को बढ़ावा देने के, अपने आप उसमें अवसर देने के रूप में हमारी सरकार के कदम आपके बीच जा रहे हैं। आज आपके बीच में मुझे 2 चीजों की और बताने में प्रसन्नता हो रही है। कल मैंने सियाम में भी ये बात बताई थी, आज यहाँ भी, क्योंकि आप लोगों से चर्चा करके ही उन चीजों का हम लोगों ने निर्णय लिया, हमारे विभाग ने, कि आपको इस पीएलआई स्कीम ऑटो के अंदर थोड़े समय की और जरूरत थी। वो हमने 1 वर्ष के लिए वो स्कीम और बढ़ा दी है। कल मैंने वहां भी चर्चा की, आज मैं आपके बीच में दोहरा रहा हूं, ताकि आपको पूरा 2027-28 तक उसके लिए अवसर मिले। साथ साथ ये आपके जो प्रोडक्ट हैं, और प्रोडक्ट 2 व्हीलर 3 व्हीलर एंड सब 4 व्हीलर में जो लगते हैं, उनकी टेस्टिंग की हमारी 2 ही संस्था थी, जिससे कार्य की प्रक्रिया में थोड़ी ढिलाई थी, थोड़ी कमी थी। तो जहां आईकैट गुड़गांव और एआरआई पुणे करता था, अब हमारा नेक्ट्रिस इंदौर और हमारी जीसीसीआई चेन्नई भी इस टेस्टिंग के काम को करेगी। तो अपने आप में आपके जो प्रोडक्ट है उसकी जांच परख में, टेस्टिंग में और गति बढ़ेगी। ये सारे कदम मैंने वहां चर्चा की, मुझे लगा यहां भी उसकी चर्चा दोहराऊं, क्योंकि कल कुछ लोग तो वहां भी थे, स्वाभाविक है, आप दोनों जुड़े हुए हैं, यहां भी हैं, लेकिन कुछ हमारे नए प्लेयर्स यहां हैं, तो उनके सामने चर्चा करना मैं आवश्यक समझ रहा हूं। आज आप सबके बीच में मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आज आपके बीच एक नई चीज बताना चाहूंगा। मंत्रालय द्वारा आपके कुछ विषयों पर बड़ी तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हमें विदित हुआ कि आपके सेक्टर में एडवांस टेक्नोलॉजी तथा ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ कठिनाइयां हैं। आप लोगों ने कठिनाइयां जो रेज की हैं, और खास करके
उसमें एकमा के सहयोग से ही हमारे डिपार्टमेंट ने ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम इन इंडिया रोड मैप 2032 तैयार करवाया है और इस पर हम सब काम कर रहे हैं, जिसमें रिसर्च करके आपकी इन कठिनाइयों का भी जो आप लोगों ने रेज की है पिछले दिनों हमारे डिपार्टमेंट के सामने, उसका भी समाधान निकाला जाए। हमने उस पर भी एक टीम बना दी है। आज आपके साथ साथ मैं पुनः उस बात को बल देते हुए कि आप लोगों ने जो एक अहम पड़ाव पर इस उद्योग जगत को, खास करके ऑटो इंडस्ट्री को पहुंचाया है, जिसके चलते आज भारत का ऑटोमोटिव उद्योग 222 बिलियन से अधिक का हुआ है, जिसके चलते आप देश के कुल निर्यात में 8% का योगदान कर रहे हैं। भारत के स्वयं के जीडीपी सकल उत्पाद में आप 7.1% का योगदान कर रहे हैं और दुनिया में तीसरे स्थान में पहुंचाने में आपका सबका बड़ा योगदान है, जिसके चलते हमारे इस ऑटोमोटिव मिशन की माननीय मोदी सरकार के आने के बाद से ही मैं इस बात को आपको स्मरण दिलाना जरूरी समझता हूं कि भारत के ऑटोमोटिव मिशन की व्यापक बड़े पैमाने पर परिकल्पना मोदी सरकार के आने के बाद 2016 से 26 की परिकल्पना की गई। उसमें तेजी से आज 2026 तक यह अपेक्षा की जा रही है कि लगभग 4 गुना बढ़कर के ये ऑटो इंडस्ट्री का कारोबार लगभग 16 से 18 लाख करोड़ के हो जाने की संभावनाएं हैं। ये सारी भविष्य की संभावनाओं की चर्चा आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आपको भारत को आगे बढ़ाने में आपके संस्था का, आपके इस एसोसिएशन का सबसे अहम योगदान होने वाला है। तो जो वैश्विक मानक है उसमें हम सब इसमें आगे बढ़ें। आज 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक ऑटो कंपोनेंट व्यापार में भारत की हिस्सेदारी जहां आज 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि आपके सहयोग से 2026 तक इसको हमें दुगुना करना है, इसको 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। इन सारे लक्ष्यों पर आज आपकी उपलब्धियों ने जो 2022-23 में 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार को रिकॉर्ड दर्ज किया है, इसमें आप ऑटो कंपोनेंट और सियाम दोनों का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज के इस अवसर पर मैं और लंबी चर्चा न करके आपके साथ एक लंबे अरसे बाद एक ऐसी सरकार जिसके अगुआ आज एक वैश्विक व्यक्तित्व के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनके और उनकी टीम के और सरकार के नीतियों में प्रतिपल भारत के आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने की और भारत को दुनिया के वैश्विक प्रतिस्पर्धा के हर मोड़ पर आगे ले जाने की ललक है। आज से पहले, मोदी युग के पहले, लोग सरकारें अपने अपने कुछ लोगों के लिए, कुछ थोड़े बहुत वायदों के लिए एक परंपरागत सरकारें चलाती थी और आज लीडर का काम क्या है? विजन देना, दृष्टि देना, दृष्टि के लिए नीति बनाना, नीति पर कदम उठाना। आज उस दृष्टि से मोदी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हर वो स्टेप उठाती जा रही है जिससे कि आप सब प्रतिभाएं, उसकी उपलब्धियां सामने नजर आ रही हैं। आप प्रतिभाओं का बेहतर उपयोग करके इतनी जो हायर जेंट्रियां बैठी है, इसी तरह समाज के अन्य जगहों पर हम कैसे सरकार के कदमों के साथ आप सबको लेकर के दुनिया के हर उन गैप को पाट करके हमारी जो 140 करोड़ की जो एक हमारे देश की ताकत है, इसे मजबूरी न समझ के इसको ताकत बना करके हम कैसे आगे भारत को ले जा सकते हैं, उस दिशा में हमारी सरकार निरंतर अनेक कदम उठा रही है और उन कदमों का प्रतिफल है कि आज हमारा वैश्विक स्थान, सम्मान बढ़ा है और हमारे नेता ने एक नई दृष्टि दी है देश को। आम जन को पहले क्या होता था, थोड़ा सा कभी कभी व्यवहारिक बातें कहने का मेरा स्वभाव है, कभी कभी सीमा पर लड़ाई हो जाती थी, कभी कभी
कोई देश पर ऐसा विपदा आ जाती थी तो देश एक साथ एकजुट हो जाता था कि नहीं, हमारे देश की समस्या, हमारे देश की चुनौती है। लेकिन नरेंद्र मोदी के युग को अगर आप विश्लेषण करेंगे तो हर कदम जो उठाते हैं उस सारे कदम में 140 करोड़ देशवासी, अभी लाल किले के इस बार के संबोधन में मेरे परिवारजन, बार बार मेरे परिवारजन, आपको एक ऐसा नेता मिला है जो अपना कोई परिवार नहीं है, आप सारे भारत के लोग, उनके 140 करोड़ देशवासी उनके परिवार हैं। इस विजन से लेकर के जो नेता आपको चल रहा है, उसने विजन दिया है कि हमें 2047 जो अमृतकाल इस 15 अगस्त से प्रारंभ हुआ है, इस 25 वर्षों में हम कामना करेंगे इसमें सभी दीर्घायु हों, मंचस्थ लोग भी सामने, लेकिन प्रकृति है, कभी कभी विधाता का विधान रहता है, उसका अपना स्थान है। लेकिन इसमें जो यंग जनरेशन है, मैं खुली आंखों देख रहा हूं कि विकसित भारत में उन्हें आगे आना है। तो ये सारे कदम जो नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं, विकसित भारत की परिकल्पना दी है, विजन दी है, दृष्टि दी है, उस दृष्टि को साकार करने पर, आगे लाने में जिन जिन कारक तत्वों का, जिन जिन संगठनों का सबसे बड़ा योगदान है, उसमें ऑटो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा योगदान है। और ऑटो इंडस्ट्री में इस आपके 63 कन्वेंशन के मौके पर मैं यही अपील करूंगा कि आप जो छोटे छोटे कल पुर्जे जोड़ करके और एक ऐसी आकर्षक चीजें तैयार करते हैं कि लोग उसको लेने के लिए लालायित रहते हैं, वो सारी मेधा क्षमता भारत को विकसित बनाने में योगदान करें और नई टेक्नोलॉजी, नए रिसर्च, इनोवेशन के साथ आगे आएं। आपके कन्वेंशन पे इसी अपेक्षा, इसी अपील के साथ आप सबके प्रति सम्मान, हृदय से आप सबके प्रति आदर व्यक्त करता हूं। नमस्कार। Thank you very much. It's my honorable ministers on the dais, colleagues, ladies and gentlemen, it's my privilege to propose a vote of thanks. Honorable Shri Piyush Goyal ji, your exemplary leadership and unwavering commitment to promoting commerce, industry and trade have played a pivotal role in shaping the economic landscape of the country. You said two things: India has arrived, it's indeed arrived, and equal opportunity for all. Thank you for that. Thank you, sir. Honorable Union Minister of Heavy Industry, Dr. Mahendranath Pandey ji. Sir, your leadership and dedicated efforts in steering India